Hello my dear students, welcome back in science classes. I am Jakpreet Kaur, your science teacher of Art and Progressive School. Dear student, in this video we will start our new chapter, that is chapter number 3 of unit 2, reproduction in animals. So let's start. So dear student, all the living things, they produce their young ones of their same kind, of their own kind. ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं जो कि उन्हीं के जैसे दिखते हैं. एंड दैट प्रोसेस बाय विच दे गिव birth or they produce their young ones are known as reproduction. Okay, so what is reproduction? The process by which animal produce their own kind is called reproduction. Okay, now dear student, reproduction are of two types. Means by the two methods the animals can give the birth to their young ones or they can produce their young ones. Okay, so first is by giving birth to young ones. First process is the living thing can give birth to the babies. Okay, so this is the young ones. Next is by laying eggs. Okay, the living things or the living animals, they give birth to their own kinds by laying egg. For example, like hen, bird, snake. Okay, so they all lay eggs. Now dear students, so the animals that gives birth to their babies are known as mammals, and the mammals, they also feed their young ones by their own milk. Okay, जो एनिमल्स अपने ही मिल्क से अपने यंग वंस को फीड करते हैं, दे आर नोन एज मैमल्स. सो देयर आर सम कॉमन पॉइंट्स, ओके, दैट relates the mammals. So let's see that. So dear student, there are some common features of the mammals. Okay, the first is the mammals reproduce by giving birth. Means all the mammals, they give or the birth to the babies or they reproduce by giving the birth to the young ones. Okay, second is they have hairy body. उनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? हेयरी होती है. ओके, नेक्स्ट इज दे फीड them by their own milk. So all the mammals, they take care of their young ones by feeding them their own milk. Okay, by feeding their own milk, they take care of their young ones. Next is they are warm blooded. Means the temperature of the mammals, it remains constant. Okay, उनका जो blood होता है वो कैसा होता है? Warm होता है. Okay, so these are an example, the common features of the mammals. Now let's see the definition of the mammal. So the definition of the mammals is the animals which produce their young ones by giving birth and take care of them by feeding their own milk. So जो वो animals जो reproduce करते हैं by giving the birth to their babies and by taking care of them by feeding their mammals. The animal which produce their young ones by giving birth and take care of them by feeding their own milk. ओके, वो एनिमल जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं यानी कि बेबीज को बर्थ देते हैं और उनका कैसे केयर करते हैं? बाय फीडिंग देयर ओन मिल्क. ओके, सो दैट टाइप ऑफ द एनिमल्स आर नोन एज मैमल्स. नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द एनिमल्स दैट ले एग्स. सो योर फर्स्ट इज द एनिमल्स दैट ले eggs. Some animals like birds, fishes, reptiles and insects usually reproduce by laying eggs. So these are called egg-laying animals. So your very first is birds. Birds such as crow, sparrow, hen and eagle, they lay eggs. Birds lay eggs in
their nest. And then they protect their eggs. The mother bird sit on the eggs to keep them warm under her feather. Okay, जो मदर बर्ड है वो एग को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, एंड इट कीप्स दैट एग्स वार्म अंडर हर feather. After a few days, the egg gets hatched and then the young ones come out. The young ones do not have feathers. Okay? अगर आपने देखा होगा तो जो young ones हैं उसमें feathers नहीं होते हैं. And their eyes are also closed. The mother bird feed them. Okay? They feed them. Means the mother bird है वो क्या करती है, अपने young ones को feed करती है. The both mother and father bird take care of their baby birds. Then they look after their young ones till they learn to fly. Okay, आपने देखा होगा जो birds हैं जैसे उनके young ones fly करना सीख जाते हैं, okay, तब तक वो उनका ध्यान रखते हैं. जैसे उनको फ्लाई करने आ जाता है तो फिर उसके बाद वो अपनी केयर खुद करते हैं. And they are strong enough to look after to protect themselves. Okay, जब उनको फ्लाई करने आ जाता है तो वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सके और अपने लिए खुद खाना ढूंढ सके. Okay, now here is a structure of an egg. So please see it very carefully. Eggs are usually oval, or we can say the round in shape, and they have the different shapes and the sizes. Okay, it varies from birds to bird. Okay, as the size of the bird is big, then the egg is also big in size, and the shape is also different. Like the bird eggs are small in size. Okay, they are in round in shape. The egg of the hen is oval in shape and it is little bit bigger. Okay, and the same way if you talk about the ostrich, it is the ostrich bird lay the biggest egg. सबसे बड़ा egg किसका होता है बेटा? Ostrich का होता है. Okay, and ostrich is also an bird. So most eggs are made of hard protective layer shell. आपने अगर एग देखा होगा तो वाइट कलर का जो शेल होता है बाहर से वो क्या होता है, हार्ड होता है. ओके, बट व्हेन द बर्ड ले एग्स एट दैट टाइम द शेल इज सॉफ्ट. ओके, आफ्टर कमिंग इन द कॉन्टेक्ट विद एयर, जैसे वो एयर के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं. ओके, सो दिस प्रोटेक्ट द ग्रोइंग पार्ट्स इनसाइड. मीन्स जो बेबी बर्ड है एग के अंदर जो एम्ब्रियो है जो ग्रो करेंगे उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. Within the shell, then there is a white thick liquid part, okay, that called the egg white. जो आपने देखा होगा कि एग के अंदर एक वाइट कलर का लिक्विड पार्ट होता है. ओके, दैट इज अ लिक्विड एंड दैट इज नोन एज एल्ब्यूमिन. ओके, जो वाइट कलर का जो लिक्विड होता है एग के अंदर उसे हम क्या कहते हैं, एल्ब्यूमिन. और जो येलो कलर का पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, यॉक. क्या कहते हैं, यॉक. सो द यॉक स्टोर्स फूड फॉर द ग्रोइंग बेबी बर्ड और द एम्ब्रियो वी कैन से. ठीक है, जो यॉक होता है वो क्या करता है, फूड स्टोर करके रखता है किसके लिए, फॉर द बेबी बर्ड दैट इज ग्रोइंग इनसाइड द एग और द एम्ब्रियो वी कैन से. एम्ब्रियो मीन्स जो बेबी बर्ड ग्रो कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं. ठीक है, देन the growing baby bird uses the yolk as its food. Okay, now here the embryo develops into a baby. First you see this structure, the yellow part is yolk and it's इसमें क्या होता है, एक एम्ब्रियो होता है. ठीक है, और एम्ब्रियो ग्रो करता है और इस यॉक में से अपना फूड लेता है. ठीक है, फॉर इट्स डेवलपमेंट. ओके, और जो एल्ब्यूमिन है ये क्या करता है, आपका बेबी बर्ड जो ग्रो कर रहा है उसको प्रोटेक्ट करता है. एंड द आउटर शेल ऑल्सो प्रोटेक्ट्स दैट बेबी बर्ड. ओके, देन द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ बेबी. आफ्टर फ्यू वीक्स वी से दैट दिस एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ बेबी. देन द एम्ब्रियो डेवलप्स, सो
when the mother bird keep the egg warm, then it's after few weeks it gets hatched. ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, हैच हो जाते हैं. देन उसमें से क्या है, एक बेबी बर्ड बाहर आते हैं. ओके, देन द बर्ड्स have to sit on their eggs for some days before they hatch. The different stages of the development of a chick from egg and then to hen are shown in this figure. You can see from this figure that from the egg how the baby hen is hatched. Okay, means the egg is hatched, then it turns to a chick, then it's turned to a hen. Okay, a young hen. So, the various stages of the development of an adult from the embryo is called life cycle of an animal. Okay, जो आपका एम्ब्रियो से या जो एडल्ट तक का जो प्रोसेस है, जो टाइम है डेवलपमेंट का, उसे हम क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल. ओके, सो देयर आर द डिफरेंट लाइफ साइकिल्स ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स. ओके, देन सेकेंड इज योर फिश. A fish lay eggs in water. The eggs of a fish are called spawn. Fish के eggs को क्या कहते हैं बेटा, spawn. SPAWN. The eggs of a fish do not have outer shell. जो eggs के जो fish के जो eggs हैं उसमें outer shell नहीं होता है. Okay, they are covered with a kind of a jelly which protects the egg from the water. जो eggs होते हैं, बहुत सारे eggs एक साथ joint होते हैं, वो क्या है, उसके outer shell नहीं होता है, but they all are protected with a jelly like substance. Okay, which protects the eggs from the water. Out of the thousands of the eggs, only a few hundred develops into a small fishes. Means at a time fish lays thousands of the egg. एक टाइम में जो फिश है बेटा वो 1000 एग्स को ले करती है, बट उन 1000 में से फ्यू हंड्रेड्स ओनली डेवलप इनटू अ स्मॉल फिशेस. मैनी एग्स एंड द स्मॉल फिशेस आर ईटन बाय बिग फिशेस. ओके, जो आपके स्मॉल फिशेस हैं उनमें से कई फिशेस क्या हैं, दे गेट ईटन अप बाय द बिग फिशेस. उनको जो बिग फिशेस है उनको उसमें से कुछ फिशेस को खा लेती हैं, एंड ओनली फ्यू फिशेस गेट दे सर्वाइव. ओके, नेक्स्ट इज योर स्नेक्स, टर्टल, lizards and the crocodile. So these are the reptiles. Reptiles like these, they lay their eggs on the ground. Okay, the reptiles like the snake, turtle, lizard and crocodile, they lay their egg on the ground. Their eggs are protected by the shell. Then the eggs are warmed by the heat of the sun. Okay, when they lay an egg, first they dig the mud in that pit, they lay egg. After that after laying the egg they cover it with the mud. Okay, आपने देखा होगा कि जो टर्टल्स हैं या फिर जो स्नेक्स वगैरह हैं ये अपने एग्स कैसे देते हैं, ये एक गड्ढे खोद के उसके अंदर एग्स को ले करते हैं, एंड आफ्टर दैट दे कवर देयर एग्स विद द मड. ठीक है, जो फिर उसके बाद जो सन की हीट से these eggs gets hatched up. Okay, then the shell of their eggs are not very hard. Okay, most of these animals do not care of their eggs or the babies. Some of these are eaten by other animals. Means once they lay egg, they don't most of them they don't take care of their eggs or their baby. So that is why the many of them are get eaten up by the other animals. And the outer cover or the outer shell of their eggs are also not that much of the hard. Okay, वो उतने hard नहीं होते हैं, that are also soft. Now next is your frog. So the same way as the fishes are laying thousands of the eggs at the same time, the same way the frog also lays eggs under the water. Okay, and
when the eggs get hatched, then the tadpoles comes out. उसमें से क्या होते हैं? tadpoles come out, आते हैं बाहर, जिसे हम क्या कहते हैं? They are the young ones of the frog. Okay, so the young one of the frogs are known as tadpoles. So these tadpoles look like small fishes only. उसकी जो जैसे आपकी फिशेस की टेल्स होती है ना, द सेम वे द tadpoles are also having the tail, okay, which help them to swim under the water. And after that, as they grow, so this tail also gets disappear. जैसे वो ग्रो अप करते हैं, फ्रॉग में कन्वर्ट होते हैं, ओके, तो उनकी जो टेल्स है वो डिसअपियर हो जाती हैं, ओके, एंड देन दे आर कन्वर्टेड इनटू अ grown or an adult frog. Okay, now students, here are some the definition of some hard words that we have studied today. So please have a look. Dear student, I hope you understood today's lecture. So in the next video, beta, we will continue this chapter. Okay, so till then, keep learning, stay safe and stay healthy.